कैनेडा बाजार मैगजीन है, बड़ी अच्छी क्वालिटी मैगजीन छापते हैं, उन्होंने वक्रे वक्रे बंदियां ने प्रोफाइल देंदे ने। Canadian Bazaar, especially being a very classy magazine, it's in English, which is read by most people. कोई हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है, इंग्लिश सभी जानते हैं। इस बारी जो गाला हो रहा है साडा चौथा गाला, इस बारी ज़्यादा साडा थ्रस्ट है जी कॉफी टेबल बुक ਅਸੀਂ लॉन्च कर रहे हैं। Really honored, humbled to be included in this coffee table book. ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि आज हम यहाँ पे हैं इंडो कनेडियन और साउथ एशियन कम्युनिटी की जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कनेडियन बाज़ार में। कॉफ़ी टेबल बुक ਉਹਦੇ 'ਚ 10 बिजनेसमैनां ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। सो नैक्सट जनरेशन वास्ते किदां आए, किदां हार्ड वर्क किया, किदां सक्सैसफुल होए, ऑल सारा कुछ ਉਹਦੇ बारे लिखा गया। प्लस ये गुरमुख सिंह दी पुराने इन्हां दी कैनेडा बाजार मैगजीन है, बड़ी अच्छी क्वालिटी मैगजीन छापते हैं, उन्होंने वक्रे वक्रे बंदियां ने प्रोफाइल देंदे ने। मैं चाहना नैक्सट जनरेशन भी पढ़िया करन ते वी हैव बहुत अपॉर्चुनिटी साढ़े वास्ते सक्सैसफुल होने दे। एंड जिन्ने इन्होंने केस हिस्ट्री देंदे ने गुरमुख सिंह खोज कढ़ के बड़ी सोहनी तरह खोज करते हैं तो बड़ी सोहनी तरह देंदे ने हिस्ट्री, तो इट्स वेरी मोटिवेशन है। But yeah, Canadian Bazaar actually is a very important segment of the Canada-India business corridor. It brings people together, writes good articles and promotes Indian business culture, etc. And today, Mr. Gurmukh Singh has this event, Canadian Bazaar, for the book launch, which is a culmination of many chapters and people, etc. So we are privileged to have him do this event, plus launch the book as well, which promotes Indian culture, Indian businesses. And right now, as I am chair of the advisory board, I traveled to India back and forth. I was there for 4 times this year, and India is now coming up very well. It's a place where the world is beating its path, and this Canadian Bazaar is one instrument which promotes business between two countries, Canada and India. Magazine communication actually is the key to everything. Business lagao, social relations lagao. And you have to have a constant feed among people, business, etc. And Canadian Bazaar, especially being a very classy magazine, it's in English, which is read by most people. कोई हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है, इंग्लिश सभी जानते हैं. So that is the reason it's so popular, and it's a good media to promote business relations, etc. So I think it's very unique that way, and especially in Toronto, which is the business center of Canada. So having this kind of magazine is very useful for promotion of Indian image, Indian business, etc. So it's unique that way. मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है, मैं वाइस प्रेसिडेंट और कॉर्पोरेट सेक्रेटरी हूँ इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कनाडा का सबसे पुराना, सबसे बड़ा चैम्बर है जो बायलैटरल रिलेशंस इंडिया कनाडा को प्रमोट करता है। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि आज हम यहाँ पे हैं इंडो कनेडियन और साउथ एशियन कम्युनिटी की जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कनेडियन बाज़ार में। और गुरमुख जी के साथ हमारा बहुत पुराना एसोसिएशन है, एंड we love supporting the success of Indo-Canadians in Canada and in India, and we wish this event to be a great success and many more years to come. Thank you. My name is Satish Thakkar, and very pleasure to be joined on this event which is organized by Gurmukh ji. Gurmukh and his whole team is doing phenomenal work. He has been publishing many Canadian Bazaar magazine, as you know, for many years, and showcasing, highlighting
the story, inspirational stories of the community, of our community, which is very kind of a long-lasting, impact-creating, and I'm really honored, humbled to be included in this coffee table book. It's a kind of a special honor. I feel overwhelmed because overall, if you look at it, the number of people being featured who have been a community champions for many decades, and your name to be included among them, it's a special honor, and very humbled. And my journey started almost 30 years ago, and if I look back, I never imagined that we'll get sometime an opportunity to be showcased or featured, which will serve as an inspirational book. So it's very special tonight, and at the outset, I always believed in that true success lies in when you uplift communities, inspire people, and create some kind of an impact into the society. So for me, success or overall life is a living thing which you carry forward day by day, moment by moment, by keeping some kind of a purpose in mind. And I'm very thankful and very honored. It's basically celebrating success stories. Indo-Canadian ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, we are celebrating their success story. ਦੂਜਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਗਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਗਾਲਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਥਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 9 ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫੀਚਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਇਨ ਬਿਗ ਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਮ ਫॉर 7, ਜਿਹੜਾ ਕਿ people love it, like what we produce, what we give them, people love them. It's a quality product, it's a quality work, so people love it, so very good response. High end ज़्यादा type ਦਾ ज़्यादा crowd है साਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ English ਹੈ, high end English, so we get very good response from that.